So all the participants, they are requested to turn on their camera. I repeat it again. All the participants are requested to turn on their camera. I think only few participants, they have turned on their camera. Shweta, Sarthak, Saloni, Khushi, Manas, Rutika has turned on. Okay. Chetna, Anjali, please turn on your camera. Okay. So good morning, everyone. I welcome you all to today's webinar on recent trends in industry practices. At the outset, I heartily welcome to today's speaker, Mr. Shubham Nere. It gives me an immense pleasure to introduce Shubham. First of all, I really feel proud that Shubham is the alumni of our department of 2022 batch. About Shubham is a founder and the Chief Executive Officer of Credos.com, Nasik. He's a self-taught working professional, system designer. He is passionate in Python programming and the Django developer. He is working with the people in the different segment of businesses and profession for the last 4 years. He worked on the thought process of the business and the startup from the technology perspective. So he always inspires the entrepreneurs and the people who are there in the technological aspects. So make their life very enthusiastic and easy as well. At Credos, they build technologies that keeps the tomorrow's consequences in mind, as well as the people's need, as well as the other stakeholders of the ecosystem. So without wasting time, I would like to request Shubham to please proceed with his session. Because he want to make this session interactive, so he has already mentioned that if all the participants, if they turn on their camera, then it would be of great interaction. So I request again all of you to turn on your camera, and I'm for sure, because he is one amongst you before a couple of years. So he will make this session more interactive, and he wanted to make it more interactive rather than one way, the one-way communication. So Shubham, over to you. Yes, sir. Am I audible properly? Yes, you are audible. You are audible, Shubham. You are loud. No problem. Oh, first of all, I would like to give a couple of thanks to sir for giving my such a beautiful introduction. So just a minute, presenting my screen. Okay, I will first stop sharing my screen, then you can share your screen. Yeah. Yeah. Shubham, now you can share your screen. Okay. Okay. First of all, good morning to all of you, and I would like to congratulate all of you to take a part in this seminar or the session or the webinar, whatever you say. Basically, introducing myself is much more better at my end to say what I do exactly, okay, and what are the fruitful things that will be like compatible at the technology, okay. So you can have it, okay.
So introducing myself as sir has introduced, but still I want to make some highlights what work I have did. Okay. So basically, I'm a Python developer and system architect. I've been working with the SP Web Connect, AP Corporation, then Green Designer Solutions. Okay. So with respect to technology, I've been working since last 4 5 years. Okay. And till date, I do have 30 plus live projects completed till date. Okay. And two startups. I'm taking actual involvement and having some stake of the work of the things of the people. Okay, so Credos is my second venture. Before that, we have worked on the Sale My Scrap, which is a scrap dealing platform for all of the scrap buyers and sellers across the country. Uh, these two platforms we have developed before 2021. Okay, so when I started such development, okay, so I would like to just tell you that it is not mandatory what you do have, what technology you know, what stand you have in your own community. It is totally irrespective of such things. Okay, when you have a will, okay, you have a will to start anything, to do anything, you can do it. Okay, it is as simple as that. Okay, so before getting ready for the seminar, here are some points that I would like to tell you all the guys. Just keep turn your camera on. Okay, just because see, I'm a one of your friend. You can assume it. Okay, so basically, what the thing is now when you turn on your camera, so I will be having such motivation. Yeah, people are listening to me, and yeah, I can give my 100% to them. Okay, for that reason, I would like to request all of you to turn on your camera. Okay, then have a pen and paper with you if possible. Take a notes on phone only. Okay, but I'll recommend to you to have a pen and paper. So whatever points you feel, these are the points which are fruitful for me. Either it may be for now, for the future, or any other aspects. Okay, so take a notes of the points that I will be uh, telling you. Then if you have doubts, just mention one by one on the paper. Okay, when you write something na, it hits your mind. Yeah, this is the thing that I have written. Yeah, I need to ask it. Okay, so just assume such scenarios and we'll get started to the we'll completed our introduction part and we'll move forward to our execution. That is the more important. Okay, so as I can see, nobody has turned on their camera. See, me, it's just like कह सकते हो आप just senior हूँ मैं. Okay, just because कि मैंने एक साल पहले जन्म लिया धरती पे. That's it, nothing else. कुछ difference नहीं आप में मुझ में कुछ difference नहीं है. तो मैं आपको एक request करूंगा, please turn on your camera, have a pen and paper, take a notes, because see the scenarios are like na, when you are focused to something na, that thing will come to you. Okay, you are not going to that thing. Okay, so if you are feeling that yeah, ये particular time है जो 1.5 hour का session हमने arrange करा है. Okay, so ये invest हो ना कि waste हो. So in that case, if you feels really that कि हाँ invest करना है, waste नहीं करना है, so just follow the instructions. Okay, sir, can everybody ask the doubts in the chat box if possible? Yes, yes, yes. Yes, yes. Is Anybody can everybody ask. allowed to? Yeah. Yes, yes. They can Yeah. ask their And doubts in before the chat starting, box. yeah. Just I will tell you all guys. Just keep noting your doubts on the page, okay, or the whatever noting mechanism you do have, okay. And once we are completed with the session, okay, we'll have a second phase that is a question and answer and discussion session. Okay, you can simply type over there and you will have your doubts. But before that, when I ask you guys, okay, uh, do you agree with me or anything that I want a response from you guys? Just in that time, just type in the chat box yes, no, or the whatever thing which comes in your mind. Okay, is that okay? You can type in chat box.
Guys, you can type in chat box if you agree with me. Yeah, Kush is saying okay. Yeah, that's great. Keep on interacting. Just because नहीं कि हाँ कुछ achieve करना है. It is not like having a mentor session or the having a guidance session. See, what I will try to do ना, uh, मैं अभी के टाइम पे जो रियलिटी मार्केट में चल रही है, ओके, उस पे हम बात करेंगे. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस वेयर वी लैग एज अ स्टूडेंट, ओके, वो एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे. देन आफ्टर वी विल हैव अ one to one doubt solving session. At that point we'll have a discussion over हाँ इसको कैसे improve करा जा सकता है. Okay, so this will be cycle. Just keep on typing in chat box whenever I ask you for. Okay. Okay. So for today's agenda, what we do have, first of all, we will go through a reality check. So we will come to know हाँ ये चीज हो रही है अभी मार्केट में, ये पर्टिकुलर तरीके से अपने को रिस्पॉन्स करना है उसको. एंड देन वी विल हैव some nice outcomes. Okay, and thereafter we will go to the web infrastructure and tech infrastructure that is being used in the industry. Okay, then we do have a one like thought in our mind, right? So that is basically development क्या होता है, coding क्या होता है. Okay, then we will have a 5 or 10 minutes of break. Okay, and we will then we will have a discussion on execution and the preparation. What we can do as a student, as a learner, or as a stakeholder, any perspective could be there. Okay, and then we'll have a technical discussion. So to the point बात करी जाए तो reality check वन यह है कि एजुकेशन सिस्टम, व्हाट यू गाइस फील एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी है अभी के टाइम पे. जस्ट कीप ऑन टाइपिंग इन चैट बॉक्स guys. If you feels it is a way of communication and it will be fruitful for you, just keep on typing. What are the actual problems or the education system flaws or the drawbacks, okay, that you guys may know have. Anybody? You guys can simply turn on your mic if you wanted to and speak. Yes, uh, dear students, you can turn on the mic and you can interact. So that's how we can take ahead this session. Otherwise, it would be very Yeah, boring for you. yeah, and I don't want your time to be wasted and my time as well, because time is a precious one when you have certain scenarios. Okay, actually in every scenario time is important, so just keep on interacting. Okay, so basically the thing is that in our education system one thing is missing, that is education. As I have experienced, basically in the education system that today we are having in India, specifically it focuses on the you can say like हाँ ये पर्टिकुलर सिस्टम है, ये पर्टिकुलर अपने को काम करना है, एंड हाँ इसका ये आउटपुट आएगा. बट आउटपुट इज नॉट एजुकेशन. एजुकेशन इज व्हाट you are having something knowledgeable thing in your mind. Okay, you are having some good thing to know about, you are having some best thing to work on. Okay, that could be education as per my review. Okay, and what we are doing today, we are just in the rat race. हाँ भाई डिग्री चाहिए, डिग्री मिलेगी तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो घर वाले शादी करा देंगे, लाइक लड़की मिलेगी. सिंपली इन इन बॉयज पर्सपेक्टिव, मतलब जो एक पर्टिकुलर, yeah, there is a too much grade pressure, you can say. Simply what the thing is na, grade pressure is one thing. Okay, and second is that how you tackle it. Okay, if anybody is saying na कि हाँ मैं मैं एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में अभी एक्टिव हूँ. ओके, एंड it's okay if I got just a passing mark, it is okay, totally fine. Okay, but if you do have some strong technical background in engineering, in that case you will be having a win-win situation. Okay, you will be having a degree also, you will be having a skill also, and if you wish to work in some venture or the company or the corporation, you will be having
such clarity, हाँ मैंने ये करा है and I know how to crack those interviews and all things. But अभी के rat race में क्या हो रहा है, हम भागे जा रहे हैं सिर्फ डिग्री के पीछे. Do you agree with me? Yeah. So this is the key thing that you have to focus on. Just don't be the part of rat race. Just sir ने बोला है join कर लो, सुन लो. This is not the thing. When we took a birth, God has gifted some special quality in our mind. Okay, you just need to see where where in which domain I do have a good fit or the great fit. Okay, so if you recognize those scenarios, you'll be having more bright future or the more happy life. Okay, so don't just be the part of rat race. Next thing is a reality check. We are stuck in all the rote learning. Okay, चलो अभी एग्जाम आ रहे हैं, प्रिपरेशन चालू कर दो. प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम? किसी के नोट्स उठा के लेके आएंगे, जस्ट उससे उससे गो थ्रू करेंगे, रीड करेंगे, रट्टा मारेंगे. दैट्स इट. Okay, and this is not the scenario for all of you. It is even for me also. Okay, when I used to be the part of that rat race. Okay, when जब मुझे पता चला कि हाँ ये चीजें ऐसी ऐसी आगे जाके नहीं वर्क होने वाली, at that time I stopped it. Okay, so it is your turn to have a great stand at your point. Okay, so having a preparation is a good thing, but not for today or the tomorrow. You have to prepare for like you can say simply, if you know learning how to learn the things, yeah, you can do better in any field. Okay, but you don't know the learning, how the process it is, how the education education is being acquired. So that becomes very difficult. Okay, so irrespective of that, what industries are asking for? As an entrepreneur, I've been working with lots of ventures, startups. Few of the MNCs I got an opportunity to work with. Okay, so I have some insights. हम कहाँ lack करते हैं? Okay, first of all, industry is asking for a strong fundamentals. Okay, जो कि हम like वहाँ पे तो lack करते ही करते हैं. Just because हाँ आज lecture था, आज bunk मार दिए. Okay, या फिर simply सर ने assignment बोला था, इसलिए इंटरनेट पे गए, कुछ तो भी डॉक्यूमेंट निकाला, पीडीएफ निकाला, या फिर गूगल तो है ही, अभी तो चैट जीपीटी आ गया है. ओके, तो वहां से कॉपी करके उठा के डाल दिया. ओके, बट वेयर इज द लर्निंग? यू गेटिंग माय पॉइंट? So it is very important when it comes to a fundamentals. Okay, अगर आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, ओके, तो आप घर से निकल भी जाओगे ना, तो भी आपको लाइक वो डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाओगे. फर्स्ट इफ यू नो वेयर टू गो, then you will be very clear what fundamentals I should follow. Okay. And one another thing is that being productive and proactive. So productivity is another thing, and being proactive that we call mostly as a presence of mind, that is another thing. Okay. So जब भी हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्टिविटी इज नॉट लाइक आज मैंने कितना काम करा. ओके, प्रोडक्टिविटी इज नॉट लाइक कि आज मैंने 10 घंटे बैठ के पढ़ाई करी, 10 घंटे बैठ के ये सारी चीजें फॉलो करी. नहीं, इट इज जस्ट लाइक ना, आप दिन के 4 घंटे भी काम करो, या फिर 4 घंटे भी कुछ जो एक्टिविटी है या फिर जो लर्निंग है उस पर फोकस करो. एट दैट टाइम ओनली you do have such a freedom of your thoughts, freedom of action. Okay, इसलिए नहीं करना है कि हाँ 10 घंटे बोला है उसको 10 घंटे करना ही है. ओके, सो डोंट गो लाइक दैट, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें आर गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट. Okay, do you agree with me? Just type on the chat box. Guys, keep on interacting. If you feel this session is not going to make any like profit or the outcomes at your end, just leave it. I won't mind regarding that thing. Okay, तो ऐसा नहीं है कि लाइक हम सीखना नहीं चाहते. बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, बट उनको बहुत बार क्या होता है कि गाइड नहीं मिलता, या फिर जो टेक इंडस्ट्री में सिनेरियोस चल रहे हैं इन डेवलपमेंट या फिर कोडिंग या फिर प्रोग्राम, वॉट एवर इट मे बी. तो द थिंग इज दैट कि हाँ ये सारी चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं जस्ट बाय having some preparation या having some prior knowledge. Okay, so
I will be focusing on more of such criteria. So, getting toward the next point, that is a need-oriented problem solving. This is the one of the most important aspect to whichever industry you apply, whichever the corporate you are working for. Even if you have a your own venture or the your own startup or your own corporate company, in that case only you have to work on the problem solving. Okay, do you agree with me? Just keep on typing in chat box, guys. If it is not interactive, then it is not fruitful. Okay, going to the next points. Yeah, some of the guys, I will like appreciate their presence that they are doing. It is totally okay that if you don't know anything, okay, if you don't know anything, you will say you don't know, but pretending that yeah, I know everything and I'll be doing that never works. Okay, so just be you, whatever you want to be, you will in future, you have to work for it. Okay, so next point is that where hustlers lag. ऐसे आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी लेवल या फिर जो स्टार्टअप्स है या फिर जो कॉर्पोरेट जॉब है उसके लिए अप्लाई करा है? Type in chat box, guys. Nobody from you have applied for the jobs. Just keep on typing. It will boost my confidence as well. Putting the efforts in you guys. Okay. So the thing is that na, technology is the thing to learn, not to teach. Whenever जब भी हम बात करते हैं कि हाँ ये बंदे ने इतना इतना पैकेज एक्वायर करा है, फिर इस बंदे को इतना इतना ये मिला, लाइक सैलरी मिला, तो इट इज जस्ट बिकॉज कि उनको टेक्नोलॉजी पता है या फिर उनको सिनेरियोस पता है कि व्हाट द इंटरव्यूअर और द कॉर्पोरेट इज आस्किंग मी फॉर एंड आई एम गिविंग दैट थिंग. जस्ट एक सिनेरियो अज्यूम करो. ओके, आपको एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, मान के चलो आपको भूख लगी. ओके, इन दैट केस इफ somebody is giving you an iPhone, that is not the solution. Okay, you need some food, you need some good food, you need some water when you are hungry, when you are tired, when you are thirsty. Okay, so same is the scenario with the industries. Okay, if I'm asking you for water and you're providing me, yeah, this is the iPhone, it worth 1.5 lakh rupee, this is too precious. What is the need of that iPhone at like current context? Nothing. So just being aware of what exactly we want to have and what industries are asking for, there we lag. Okay, that is not a thing like मैंने डायरेक्टली ऐसे बता रहा हूँ कि आपको मैंने बहुत काम कर लिया है, नहीं. बट रियल लाइफ सिनेरियो भी ऐसे ही है, और टेक्नोलॉजी लेवल पे जब भी हम काम करें वहां पे भी चीजें ऐसी है. आपको आगे जाके पता चलेगा कि हाँ, कि scenarios will be different, scenarios will be drastic, like whatever the thing it will be wiped out tomorrow only. Okay, because technology is too vast to learn. Okay, but what you can do is you can invest yourself in learning. Okay, मतलब टेक्नोलॉजी ना मत सीखो, सीखना कैसे ये सीख लो. ओके, when it makes like बोलते हैं ना कि कुछ चीज आ रही है वो एक अलग बात है, और कुछ चीज कर रहे हैं वो अलग बात है. जो कर रहा है उसको रियल लाइफ सिनेरियोस पता है. ओके, जिसको आ रही है उसको सिर्फ पता है. ओके, बट जिसने एक्सपीरियंस करा है उसको जो बोलते हैं ना, उसको स्कोप ऑफ वर्क पता है कि कितना है, या फिर उसको पता है कि हाँ इसमें मेरा फ्यूचर बन सकता है या नहीं बन सकता. डू यू एग्री विथ मी गाइस? डू यू एग्री? या few of you are putting your comments in chat box. Yeah, that's great. Okay. So whenever a point comes to learning, what it is actually, I'll tell you. First is reading, second is listening, and third is applying. Okay, Sarthak, yeah, you got it. Ishika, yeah, good, good, great guys.
So whenever you guys are be aware of learning or the what is actual education is, okay? So it has a three pillars. आपको एक एक कोई भी कंसेप्ट है, मान के चलो आपको सीखना है कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, ओके? तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? सिंपली आप गूगल पे जाओगे, देखोगे कि क्या चीज है एग्जैक्टली, मतलब यू आर गोइंग टू लिसन, या फिर जो रीडिंग रीडिंग कॉन्सेप्ट है, तो रीडिंग एक हो गया, लिसनिंग एक हो गया, या फिर आप खुद करके देखोगे जब आपको बेसिक या फिर फंडामेंटल्स पता है, ओके? सो इन दैट केस व्हाट वुड बी द सिनेरियोस लाइक, हाँ, अभी मुझे पता है, वो पता कब चलेगा? व्हेन यू विल बी रीडिंग इट, व्हेन यू विल बी लिसनिंग इट, ओके? एंड रीडिंग is a 10% of your learning, listening is your 20% of your learning, and when you apply, okay, this is how whole brain mechanism works in human mind, okay? So when you apply or do or try for that thing, you will come to know up to 80%, okay? और जब उसको आप रिपीटेडली ट्राई करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, यू विल बी एक्सपर्ट इन दैट। हाँ, वो अभी आपके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग या फिर सोर्स ऑफ जो बोलते हैं ना कि हाँ सिर्फ सीखना था इसलिए सीखना है, वो नहीं रहता। when you are coming to the stage of 90% kind of 90 and 90% level of your learning, that time you will be an artist, okay? So this is just like ना कि हाँ, कर रहे इस ये चीजें नहीं वर्क करती। when you read you will be getting just 20%, when you will be listening it आपको सिर्फ उसमें से 20% आउटकम्स मिलेंगे, और जब आप खुद से ट्राई करोगे, ओके, या फिर खुद वो चीज को अप्लाई करोगे, एट दैट टाइम यू विल बी गेटिंग, might be 80%, might be 90%, might be 100%, depending totally upon the intensity that you put in your work, okay? Is it clear, guys? Guys, okay, coming to the next points, coding, yeah, कोडिंग जो है, वो कोडिंग कंसेप्ट क्या होता है बेसिकली, वो एक बात सोचो पहले। तो व्हेन इट कम्स टू कोडिंग, ओके, कोडिंग मींस क्या है? कुछ तो भी लॉजिक है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज अ सिंपल थॉट ऑफ कोडिंग, ओके? एंड जब आप बहुत लोगों ने अभी एग्जाम्स दिए होंगे इन सेम पे या फिर प्रीवियस सेम में, जो प्रैक्टिकल्स होते, प्रैक्टिकल एग्जाम्स, तो वो टाइम पे आपने ये चीज डेफिनेटली करी होगी, मैंने भी करी थी इनफैक्ट ओके। कोड माइंड में टाइप करते हैं हम इंस्टेड ऑफ कंपाइलर, ओके? कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर का काम है टू कंपाइल, एडिटर का काम है टू हैव अ like code typed on any kind of a platform that you will be using, okay? So at that time compiler is like, हाँ मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूंगा, okay? So the thing is not like कि हाँ आप क्या कर रहे हो, सिर्फ रट रहे हो। रटना won't work when you are applying the things on technology, okay? So whenever it comes to the implementation, it is the thing when you will be working on the live platforms. Say, if I'm saying ना कि मैं Python developer हूँ, मैं मेरे Python के कोड दिमाग में नहीं है, okay? I just know the logic, I just know how to implement, I just know कि हाँ ये particular प्रॉब्लम आने के बाद इसको कैसे टैकल करना है, ओके? सो जस्ट डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग, typing or the pasting your code in the mind and you will be just writing on the paper in the exams. No, that doesn't work. Okay, so it is just like कि हाँ, कंपाइलर को अपना काम करने दो, आप आपका काम करो, you are humans, not the compilers, okay? So moving toward the next point, that is a problem is not problem when you know the problem. प्रॉब्लम सिर्फ तब तक है जब तक आपको पता नहीं कि इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, या फिर सिंपली आपको प्रॉब्लम का क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं, तभी तक प्रॉब्लम है, ओके? सो व्हेन इट कम्स टू दी preparation of your exams or the preparation of anything, what thought in your mind have, हाँ ये पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस आगे आने वाले हैं, उसके लिए मुझे प्रिपेयर रहना है, ओके? So what does it talks about? It is totally about mindset. Okay, whatever the thing you will be having in future, okay, you start assuming in.
in your mind. Okay, so just prepare your mindset. हाँ, मुझे अगर सिंपली ये पर्टिकुलर कंपनी में या फिर ये पर्टिकुलर चीज करनी है, नॉट ओनली ऑन टेक्नोलॉजी, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप चले जाओ, या फिर कोई भी चीज उठा के देख लो, पहले वो दिमाग में बनी है या फिर उसका एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है, एंड देन इट कम्स अ रियल फॉर्म और द फिजिकल फॉर्म. Okay, do you agree with me? Just type in the chat box. Yeah. So coming to the next point, that is having a mentor or the guide. So what do you feel mentor is? Like हमें ना कॉलेज में एक मेंटर सिस्टम है, हमें एक मेंटर बुक दिया जाता है, हम उसको फिल करते हैं. That is not a mentorship. Okay. When you are asking for a mentor or the कुछ कुछ चीजें होती है कि हाँ जो आपको पता नहीं, that will show you a path, जो आपको गाइड करेगी, that is actual mentorship. Mentor won't be giving you knowledge, he will be just giving you the path. आपको कैसे जाना है या फिर कहाँ कहाँ जाके दिक्कतें आ सकती है. ओके, सो हैविंग सच अ मेंटर. ओके, ये पॉइंट पे मैं एक मेरा खुद का किस्सा सुनाना चाहूंगा. When I started development in 2016-17, okay, I used to work on Android that time. So for 1 year, I've done lots of projects, like 2-3 projects actually, not lots of projects. So वो टाइम पे मुझे पता चला कि डेवलपमेंट क्या होती है, बट जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो काम चलता है वो मुझे तब जाके पता चला कि हाँ, मेरा एक दोस्त है हर्षवर्धन करके, लाइक उसने मुझे बताया कि हाँ ये चीजें आगे जाके ऐसे वर्क करेंगी. तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज जस्ट गाइडिंग मी. ओके, ही इज जस्ट मेंटरिंग मी. ओके, तो अगर मेंटर है आपके पास, जो जो काम करने को आपको 10 साल लगेंगे ना, वो आप 2 साल में कर दोगे. This is where the mentor or the guide take his or her stand. Okay. Now you will be saying, हाँ mentor कहाँ ढूंढे कहाँ जाए. आपको सबसे पहले तो लाइक लोगों को पूछना पड़ेगा कि हाँ मैं ऐसी ऐसी चीज ट्राई कर रहा हूँ, आप मुझे गाइड करोगे क्या, या फिर पर्टिकुलरली जिस डोमेन में आप ट्राई कर रहे हो, वो एक पर्टिकुलर डोमेन में जो जो लोग हैं या फिर जिन जिन लोगों ने करके या फिर एक जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइन में है, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जीक्यूट कर चुके हैं, एंड जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं. ओके, ये 3 लोग होते हैं बेसिकली. तो उनको आप मेंटरशिप के लिए डायरेक्टली आस्क कर सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज व्हाट योर इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन इज व्हाट you are doing. Okay, that's it. This is a basic definition of implementation. Just आपको करना है. Okay, ऐसा नहीं कि कुछ भी करना है. That's why I have made certain steps. पहले पहले माइंड प्रिपेयर करो, उसके बाद एक अच्छा मेंटर ढूंढो जिसने पहले काम कर चुका है, उसके बाद आप खुद से चालू करो, कुछ चालू करो. Okay, this is not a race of perfection. Okay, but yeah, you have to start today. Okay, as I have mentioned, take some baby steps. What baby steps do ना, they will boost your confidence. Okay, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है कि हाँ आपको चीजें पता है, आपको चीजें आती है, बट आप ट्राई ही नहीं करते. दैट इज वेयर वी लैग. ओके, यू गेटिंग माय पॉइंट्स? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स गाइस. यहाँ सार्थक इज सेइंग यस. ओके, ग्रेट सार्थक. Next thing, that is motivation and discipline. Okay. One of my friend in this office only was asking how you stay motivated all the time and you are working very hard and like. भाई ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है. When you follow discipline, motivation का जरूरत रहता ही नहीं है. Okay. Discipline is what ना, you are doing things on a regular basis. या फिर तब तक आप उसको छोड़ते नहीं हो जब तक आप एक परफेक्शन या फिर जो बोलते हैं ना कि हाँ ये इसमें कुछ भी रहने दो, आई एम रेडी टू डू इट. ओके, तो वो स्टेज कब आता है? व्हेन यू वर्क ऑन द थिंग्स विद द डिसिप्लिन. ओके, मोटिवेशन इज जस्ट लाइक ना हाइक इन योर डोपामिन लेवल, नथिंग एल्स. ओके, मोटिवेशन स्पीकर्स आपको पता है, नहीं तू कर सकता है, नहीं तू कर सकता है, तेरे में दम है, तेरे में दम है. भाई क्या कर रहा है? थोड़ा स्ट्रैटेजिक वे में अगर सोचा जाए ना, मोटिवेशन इज जस्ट अ मैकेनिज्म टू पुश योरसेल्फ. ओके, हाँ वहां से पुश कर दिया, लेकिन हर बार आपको वो धक्के की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. ओके,
So that is where discipline takes a stand. When you are going to implement such things or the technology things with the discipline, na, so it will work and it will definitely work. Okay. So this is where we have a thing like क्या करना है या फिर क्या एग्जैक्टली करना चाहिए. ओके. हमारे दिमाग में एक होता है कि हाँ अभी तो मैंने लाइक अभी तो सिर्फ इंजीनियरिंग पास कर लिया. ओके, इसके आगे फिर एक कोर्स कर लूंगा. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंजीनियरिंग आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि हाँ इंजीनियरिंग कर लिया अभी क्या करना. ओके. तो ये एक पॉइंट पे लाइक बहुत मीम्स बहुत कंटेंट वायरल होता है. बट इट इज अ पॉइंट वेयर वी नीड टू थिंक सीरियसली. ओके. It is like you're investing your 3 or 4 years, okay, in the engineering. It is like बहुत टाइम होता है 4 साल. ये 4 साल में ना कोई 10,000 20,000 करोड़ की कंपनी बना देता है और कोई जस्ट सोचते रहता है. शार्क टैंक आई गेस आप लोग देखते होंगे. यू नो द एक्चुअल सिनेरियोस के आईआईटी के 18 18 19 19 साल के लड़के दे आर मेकिंग 2 or 3 करोड़ कैपिटल एंड जनरेटिंग फॉर देयर वेंचर्स कंपनीज. Okay, so it is not about ki ha they are making such a huge profit or they are making such a huge things. Okay, it is just about they have followed such discipline, they have followed such guidelines. Okay, it is not like कि हाँ मैं ऊपर से टपका हूँ मुझे सब आता है. नहीं, अपने को कुछ नहीं आता. जब भी सीखना है ऐसा ही एटीट्यूड रखना है कि हाँ भाई मेरे को नहीं आता, तू बता, तू बोल, सिर्फ तू बोल, मेरे को सुनना है. If you follow that attitude, you will be getting like very good results. Okay. Coming to the next point, that is the learning is a life skill. Uh, as we have discussed earlier, learning कैसे होती है, क्या होती है, हमने तो पहले देख लिया. आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि लर्निंग जो है ना, इट इज लाइक ना कि हाँ एजुकेशन या फिर डिग्री, दैट इज अ लर्निंग. नो, दिस इज नॉट अ लर्निंग. Learning is what when you are done with your education and you are having a real life challenges, real life scenarios to face, there actually you learn. Okay, so whenever it comes to learning, just be prepared कि हाँ ऐसे ऐसे consequences आ सकते हैं, इसके लिए ऐसा ऐसा preparation चाहिए. Okay, और ये आपको तभी आएगा जब आप खुद से चीजें ट्राई करोगे. Why I am focusing for this thing? Some you might feel this is a theoretical content. Why you guys are why you are telling such things? Okay, but no, these are the fundamentals. Okay, when you start anything or when you want to explore anything, या फिर आपको कुछ भी करना है, ये these are the basic steps. Okay, वो टेक्नोलॉजी कितनी भी बड़ी हो, okay, उसको बनाने वाला एक इंसान ही है. Okay, उसको चलाने वाला भी एक इंसान है. और वो इंसान किस चीज से चलता, दैट इज योर थॉट प्रोसेस. Do you guys agree with me? Just type in the chat box, guys. Keep on interacting. Okay. Moving towards next part. That is, yeah. Akshada saying yes. Yeah, that's good. Moving towards next part. That is the web infrastructure and tech infrastructure. Uh, what do you feel? The role of technology हमारे day to day life में क्या role होता है? Just put on chat box. Okay. मैंने मेंशन करके रखा है. जस्ट से कि हाँ ये चीज मेरी लाइफ में या फिर टेक्नोलॉजी इज पुटिंग these many things in my life and I'm having some good results, या फिर हाँ मेरा कन्वीनियंस बढ़ रहा है या फिर मैं कुछ चीजें अच्छे से कर पा रहा हूँ. व्हाट इज योर स्टैंड फ्रॉम टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? just type in chat box or if any you can just unmute yourself and talk. Guys, keep on interacting. Till the time you don't interact, it won't work for you. This will be totally waste. Okay, because I do have my own experiences. जब मैं भी सेमिनार करता था, I was just like हाँ कान में हेडफोन डाल लिए, सुन रहा हूँ. नहीं, जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन या फिर इंटरेक्शन करेंगे ना, तब पता चलेगा कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे वर्क करेगी. एंड इज इट गोइंग टू वर्क फॉर मी? सबसे पहली बात. यू गाइस गेटिंग?
Okay, when it comes to the role of technology, na, uh, in communication, you guys all well aware of social media or the communication technology right now we have. Okay, so it is like ना कि हाँ communication totally आज का जो communication चल रहा है that is totally on technology. I see even we are communicating, that is the technology somebody have built, okay, in the past. Okay, or it might be like technology could be used for any kind of ease that you want in business. Okay, it might be a communication, it might be a management, it might be a having accountability mechanisms, anything could be there. Then second part comes, third part comes, that is accuracy in trade. Okay, whenever you want to deal with massive amount of calculation, technologies takes a part over there. Okay, then comes efficiency. When you want to manage the infrastructure or the manage the internal things in the business, so at that time it takes role. Okay, and so on. There are lot much things to do with the technology. But yeah, these are the fundamental things that are playing a role in the technology. So it is just like ना कि हाँ हमें पता है टेक्नोलॉजी क्या है, वी विल इम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू आवर डोमेन, या फिर हाँ मुझे पता है ये चीज कैसे काम करती है, तो मैं उसको सीख के या फिर उसको देख के उसको मेरे डोमेन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मेरे लिए वो कैसे फ्रूटफुल हो सकती है, वो चीज पे हम फोकस करेंगे. ओके सर, दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. Now coming to the next point, that is a web infrastructure. Okay. Now as of now you guys know कि हाँ टेक्नोलॉजी क्या है. You are all a bachelor student in information technology. You're doing great. I hope so. So I think you are aware about these things that I have mentioned in the PPT. Okay. So website क्या होता है? I think you know it well. Okay. Then when it comes to security, when it comes to media, technology has the power. या फिर technology has that thing to manage all the change. Okay. So when it comes to the web infrastructure or the tech infrastructure, whenever any business is asking us for the technology, what we do provide. Okay. In the industry, in startup, in small ventures, small corporates, MSMEs, all level of the business, there are some technicalities that you have to focus on. Okay, so there could be a web infrastructure where you need some hosts, some websites, some domains, some servers to serve the content. Then there is a media to manage your files, you manage your objects, manage your data. Okay, then comes database. When it comes to database ना, database is just like हाँ कुछ लिख के रखा है, उधर जाके उठा के देख लो, just copy paste it. Okay, then when it comes to the security, you guys all are aware about network. Okay, आपने देखा होगा Instagram हैक हो गया, फिर मेरा Google अकाउंट हैक हो गया, Facebook अकाउंट हैक हो गया. What it is? These are all concerns with respect to the security. Okay, and when it comes to security, the businesses take it very seriously. Okay. So मेकिंग सच इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी टू वर्क, या फिर हमको पता है कि हाँ ये चीजें कैसे वर्क करती है, तो हम ये चीजों को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव हर्ड अबाउट दी हाँ कि ये क्रेड करके या ये एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन या फिर वेब एप्लीकेशन है, एनीथिंग. ओके, तो ये एप्लीकेशन इज लाइक यहाँ पे बहुत क्राउड आता है. हाँ, इनके सर्वर्स लाइक बहुत बहुत कंज्यूम होते हैं. लाइक इन अ मंथ दे आर पेइंग hundreds of dollars, thousands of dollars to the server managing companies or the server management companies. Okay, so what it is? This is just a tech infrastructure that you can work on. Okay, in company or the in industry where you do have a scope. Okay, so these are the all things related to the web infrastructure. Now, as an IT engineer, where you can take stand. Okay, कोडिंग आप सबने करी होगी, आपको पता चला होगा हाँ ये चीज तो हमारे कोई पल्ले पड़ नहीं रही है, तो ये हम जस्ट रट रहे हैं. ओके, या आई नो, बट मैं भी निकल चुका हूँ वो एक फेज से. ओके, so it is in information technology or any of the software industry, it is not just about coding.
या फिर डेवलपिंग लॉजिक या फिर मेकिंग सर्टन थिंग्स वर्क। ओके, आपके क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, ओके, 100 स्टूडेंट्स, लाइक यू आर हैविंग एजुकेशन, तो 100 में से 100 तो रोज नहीं आते। कुछ लोग सिर्फ एग्जाम्स देने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ लेक्चर्स करने आते हैं। हाँ, एग्जाम देने तो सब आते होंगे, ओके, बट when you take a stand at the when how the college infrastructure works, okay, there you do have a principal, you do have a management body, you do have your teachers, staff, then teaching staff, non-teaching staff, you have a students, you have a alumni, then you do have some infrastructure buildings, okay. So या फिर simply you can say ना कि हाँ, every contestant या फिर every participant has his or her own stake, okay. So जब हम वो एक stake की बात करते हैं, तो what actually we work for या फिर what actually we think of, okay, it is you can say it is just an ecosystem, okay. So in the corporate ecosystems we have certain kind of roles, okay. Even we don't know कि हाँ IT मतलब सिर्फ कोडिंग है, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोडिंग is just a few percentage, okay, and those few percentage are not mandatory for all of you to do, okay. It is just like हाँ, आपको फंडामेंटल्स मालूम होने चाहिए, आपको चीजें कैसे वर्क करती है टेक्नोलॉजी में वो मालूम होना चाहिए, या फिर आपको उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ मैंने टेक्नोलॉजी यूज करके आई नो हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, या फिर हम जो बनाएंगे वो उसको कैसे काम करना चाहिए, ओके। तो फॉर दैट रीजन these are some roles I have listed over here. One is your business communication lead। मतलब business communication lead मतलब क्या है? एक बंदा है जो सिर्फ जाके क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा है और उनका एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ भाई, मेरे को ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे ये बना के दे। मान के चलो कि आप मार्केट में घूम रहे हो, आपको किसी ने बोला कि हाँ मुझे ना अभी एक बिलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप बना के दो मुझे, ओके। तो दिस इज अ नीश, ओके। तो वो एक ट्विटर पे लीड या फिर कम्युनिकेशन वाला जो एग्जीक्यूटिव रहेगा सिंपली जाएगा कस्टमर के पास एंड मीटिंग में क्या डिस्कस करेगी कि हाँ आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो, या फिर आपको एग्जैक्टली किन किन पॉइंट के लिए लाइक सिस्टम या फिर टेक्नोलॉजी बनाना है, या फिर क्या क्या चीजें अवॉइड होनी चाहिए। दीज आर ऑल द स्टफ दैट इज बिजनेस डेवलपमेंट या फिर कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव इज गोइंग टू डू। मैंने खुद ने एसपी वेब कनेक्ट के साथ 2018 और 19 आई गेस 18 बिजनेस डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा था एट दैट टाइम। हाँ, आई वाज डूइंग इट ऑन पार्ट टाइम बेसिस, ओके, बट उसमें ये जरूरी नहीं था कि मुझे कोडिंग आनी चाहिए या फिर मुझे डेवलपमेंट आना चाहिए, या फिर क्लाइंट इज नॉट गोइंग टू आस्क मी कि हाँ भाई डेटाबेस में कितने एट्रीब्यूट मेंशन करेगा या फिर डेटाबेस में कितने टेबल रखेगा। नहीं भाई, इट इज नॉट माय जॉब। I do have a specific role to follow. I do have some certain responsibilities to have. Okay, and I'll be working on that parameter only. You guys, I hope you guys are getting what I mean to say. Then comes business analyst. Business analyst is having his own set of tasks. Then there is system architect. System architect क्या होता है ना? Simply, yeah. Is there anyone who want to speak? Anybody? Okay, no issues. सिस्टम आर्किटेक्ट क्या होता है ना, सिंपली मान के चलो, यू नो द रिक्वायरमेंट्स, यू नो द क्लाइंट्स व्हाट एक्चुअली वांट्स, ओके। और आपको पता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज है, इसका क्या बनेगा। लाइक उसको सिर्फ एक एप्लीकेशन चाहिए, सिर्फ एक वेब पेज चाहिए, या फिर उसको सिर्फ एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। एट दैट पॉइंट ना, वो सिस्टम आर्किटेक्ट डिफाइन करता है व्हाट इज द स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या फिर व्हाट इज द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, ओके। या फिर वो सिंपली मैप करेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदे को बिलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, तो बिलिंग में क्या क्या होता है। बिलिंग में टैक्सेशन होता है, बिलिंग में अकाउंटिंग होता है, बिलिंग में सीआरएम कुड बी देयर, लाइक कस्टमर का डेटा रख सकते हैं। तो दीज आर ऑल फैक्टर ही इज अवेयर ऑफ, बट ही इज नॉट अवेयर ऑफ कोडिंग या फिर ही इज नॉट अवेयर ऑफ प्रोग्रामिंग। हाँ, उसको बेसिक फंडामेंटल्स पता है, ठीक है। तो दैट इज वेयर यू गाइस कैन हैव योर ओन स्टैंड कि हाँ ये चीजें आगे जाके ऐसे वर्क करेंगी। Okay, I hope you guys are getting good.
inputs from my end. Just put your questions whenever it comes to your mind कि हाँ ये particular point पे नहीं समझा. Just put your questions on chat box. I'll answer it. Okay. Then comes your UI UX engineer. UI UX is what na कि हाँ it is building a user interface and his that user interface is liable or the responsible for providing the experience, a good experience. Okay, so with that with respect to that particular domain, UI engineer, what he does, he will design a certain set of UI. He will work with the some drawings. He will work with the some uh, यूजर एक्सपीरियंस काइंड ऑफ थिंग या फिर बोलते हैं ना कि अभी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो ओके और आपको ऑनलाइन पेमेंट फोन में दिख रहा है आपको हर बार लाइक अनलॉक करके देखना पड़ रहा है कि हाँ फोन में पैसे आए या नहीं आए ओके एट दैट टाइम व्हाट यूएक्स इंजीनियर विल हैव अ थॉट ऑफ हाँ अभी मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं एंड मुझे उसका नोटिफिकेशन चाहिए जब भी आए ओके मान के चलो आई एम हैविंग सम चाय स्टॉल वाला बिझनेस ओके माझा एखादा चहा स्टॉल आहे ओके एंड आई वांट सम इनपुट मैकेनिज्म कि हाँ ये पर्टिकुलर कस्टमर ने पेमेंट कर दी है और वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए मैं हर बार सिस्टम में जाके नहीं देखूंगा कि पेमेंट आई है या नहीं एट दैट टाइम व्हाट पेमेंट कंपनीज डू ना they have introduced the sound box okay what sound box is doing whenever client is making payment, there is one alert. हाँ, 14 rupees have received या फिर 20 rupees have received. Whenever your payment trigger links, whenever your payment triggers, at that time it notifies the user. Okay, that हाँ ये particular action है ये complete हो गया है. Okay, at that time he is having a good experience with technology. Okay, you guys getting what I'm coming. So these are some certain aspects whenever you are willing to have a first step in your industry. Either it could be a technical, it could be non-technical, but हाँ आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें ऐसे ऐसे वर्क करती हैं और इसके लिए मुझे ये प्रिपरेशन चाहिए. Okay. Then coming to the development, front end development, back end development, database management. I think you guys are like आपको बहुत अच्छे से पता होगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है. फ्रंट एंड इज लाइक ना कोई कोड कर रहा है जो यूआई यूएक्स इंजीनियर ने काम करके रखा है एंड ही इज जस्ट डेवलपिंग दैट व्यू लेवल ओके जो दिखेगा या फिर कस्टमर को लाइक he'll experience that thing. Okay, what he will do, he will type some code, he will use some libraries, he will implement some packages. Okay, then he will have some user interface. Okay, this is just the coding part. I will not go as of now in this particular like code kind of thing. Then coming to the backend, backend क्या होता है? Backend is your business logic. Business logic क्या है? हाँ, मुझे एक ऑपरेशन करना है. जब भी मेरे डेटाबेस में मतलब अकाउंट में पैसे आ जाए तो मुझे उसका एक अपडेट करना है कि हाँ पहले इतने पैसे थे अब इतने ऐड हुए हैं उसका एक टोटल मिला के ये दैट इज योर बिजनेस लॉजिक नथिंग एल्स ओके व्हेन यू नो टूल्स व्हेन यू नो टेक्नोलॉजी व्हेन यू नो द लॉजिक यू कैन इम्प्लीमेंट इट ओके कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें गेटिंग माय पॉइंट जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स. देन कमिंग टू डेटाबेस मैनेजर क्या होता है कि लाइक हाँ डेटाबेस को मैनेज करना एज अ सिंपल काइंड ऑफ थिंग एज यू कैन अंडरस्टैंड बट नहीं उसको एक डेप्थ अंडरस्टैंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होता है कि डेटाबेस कैसे वर्क करता है ओके या फिर डेटाबेस का एक्चुअल सिस्टम में कितना इन्फ्लुएंस है या फिर डेटा से कितनी चीजें ऑपरेट हो पा रही है ठीक है एवरी डिपार्टमेंट इट हैज its own roles and responsibilities you have to follow. Coming to the project coordinator, he'll be coordinating with the teams and managing all the things. Whether every developer is writing a good code या फिर कुछ bugs आ रहे हैं तो उसको कैसे resolve करना है, he knows. Then comes to the IT department. IT department का काम क्या है? सारे resources available करा के देना. That is the काम of like work of the IT department. Then coming to the software tester एक
मैनुअल टेस्टिंग होता है, एक ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है। आई गेस सेलेनियम आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, इट इज वेरी पॉपुलर अमंग टेस्टिंग फील्ड, इन टेस्टिंग फील्ड। तो वहां पे क्या होता है ना, आपको पता है बिलिंग सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, या फिर आपको एक डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर बन चुका है, इसको ऐसे ऐसे वर्क करना चाहिए। यू आर जस्ट क्रॉस वेरीफाइंग इट। यू आर टेस्टिंग मीन्स व्हाट, यू आर डूइंग जस्ट क्रॉस वेरिफिकेशन। हाँ ये स्टेज तक बिजनेस लॉजिक जो है वो प्रॉपर वर्क हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। तो इट इज लाइक जस्ट ना कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपको जो कहा गया है वो करना। यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Guys, keep on interacting. This is just me who is sending you some thing and you are receiving with your ears. It's not like that. Okay, coming to the next point, that is your cloud engineer, network security admin, DevOps engineer. What these people are doing, they are just establishing a server infrastructure or the network infrastructure, okay, with respect to their domain and their technology. Then coming to the data analyst का काम क्या है? Simply data analyst is like ना कि हाँ उसको पता है कि हाँ ये अपने पास अभी इतना डेटा है, इनसे कुछ insights लो, इससे कुछ आगे बिजनेस आएगा क्या वो देखो, या फिर how the attributes or the data is going to make an impact in further consequences. मान के चलो कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कस्टमर्स का डेटा, ओके, तो डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, वो कस्टमर्स का डेटा देखेगा, उसमें जाके देखेगा कि लाइक हाँ ये पर्टिकुलर कस्टमर का बाइंग बिहेवियर अच्छा है, मतलब इसने रिपीटेडली 4 से 5 ऑर्डर्स प्लेस करे इन लास्ट 4 मंथ्स। तो हाँ, देर इज अ पॉसिबिलिटी अगर इसको हम मार्केटिंग का ईमेल भेजेंगे या फिर मार्केटिंग का कैंपेन ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ पीपल के लिए करेंगे, दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर बिजनेस। ओके, दैट इज वेयर द डेटा एनालिस्ट और द एनालिस्ट टेक्स अ रोल। उसको सिर्फ एनालाइज करना होता है कि हाँ ये कॉन्सिक्वेंसेस है तो आगे क्या होगा। इट इज जस्ट लाइक दैट। Okay, then coming to the HR, you know what is a talent acquisition company and what sales and marketing. Sales is what? Sales is what कि हाँ आपको आपके पास एक प्रोडक्ट बन गया है या फिर आप बनाने वाले हो एंड यू आर जस्ट पिचिंग इट। ओके, पिचिंग या फिर बोलते ना कि हाँ मेरे पास एक चीज पड़ी है, कितने में खरीदोगे, दैट इज द सेल्स या फिर निगोशिएटिंग। ओके, देन कम्स मार्केटिंग। एक्चुअली स्टैंडर्ड पॉइंट इज लाइक ना पहले मार्केटिंग होता है फिर सेल्स होता है। ओके, बट आई जस्ट हैव मेंशन ऑल द पॉइंट्स इन द क्लटर्ड वे, बट इट्स ओके। ओके, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? टू असाइन द मार्केटिंग कैंपेन्स टू एवरीबॉडी हु इज एग्जीक्यूटिव। ओके, या फिर सिंपली जो मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग में सिंपली क्या है, आपके पास एक चीज है, ये आपको दिखानी है सामने वाले को, उसको अवेयरनेस क्रिएट करना है, उसको बताना है कि हमारे पास है, आर यू विलिंग टू हैव इट फॉर योर बिजनेस और फॉर योर ओन सेल्फ। ओके, तो वो चीज है मार्केटिंग, नथिंग रॉकेट साइंस। ओके, आई गेस यू गाइस हैव like little bit knowledge about this, how the technology is working and how every stakeholder is taking their standpoint. Okay, so if you see all these things in three three things like front end development, back end development, and database management, only these things need a coding knowledge, nothing else. स्कोप बहुत बड़ा है, हम खुद को लिमिट करके ले रहे हैं। ओके, तो we'll have a next thing to discuss. 6 phases of software development life cycle, SDL से आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, क्या सीखा आपने SDL से? जस्ट वन ऑफ यू जस्ट प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाटएवर द थिंग, कुछ भी, लाइक सॉफ्टवेयर क्या होता है वो ही पढ़ा होगा, या फिर उसको डेवलप कैसे करते हैं वो पढ़ा होगा। जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ गाइस, अनम्यूट या फिर चैट बॉक्स में टाइप करो, जस्ट आई विल कम टू नो कि आप कहाँ तक हो भी। ओके, टाइप इन चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स।
Sorry for disturbance. Guys, keep interacting. It won't work when you are just listening. Okay. What are the 6 phases that every industry is following and where you can take a stand? Okay. Uh, Coming to the development part now, when it comes to the development, it is not about just making something and putting it in a like box for use. Okay. It is like it is a cycle actually. Okay. First step is analysis. Second step is designing solution. Okay. Analysis is what you have to analyze the requirements. या फिर आपका एक बर्निंग प्रॉब्लम क्या है या फिर प्रॉब्लम क्या फेस करे जिसके लिए आपको टेक्नोलॉजी बनानी है. So at every level, everybody has their own stake, like product owner या फिर product project manager है, business analyst है, CTO है. उनका काम क्या है? हाँ, वो जस्ट मार्केट में जाके देखते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज है, ये पर्टिकुलर चीज को ऐसे ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं. Then comes designing part where system architects, then UI UX designer will be having their context of a development. Then comes data front end and back end developers. This is just a single part, okay, of the development. Again, I'm coming to the same thing. Many of you have just lost their confidence just due to कि हाँ मुझे कोडिंग नहीं आती, मैं आगे नहीं कर सकता. नहीं, ऐसा नहीं होता. Just you have to explore कि हाँ मैं कहाँ पे फिट बैठ सकता हूँ. That is the thing. Okay. Then comes testing. In testing, you do have a solution architect role. Then you do have a quality engineer. Then you do have a tester. You do have a DevOps. Okay. So this is just like taking your own standpoint and completing it. Okay. Then deployment team is there where DevOps engineers works. Then maintenance team is there. Whichever the work you have assigned, you will be working on it simply. Okay. सिंपली किसी भी एमएनसी में जाओगे ना आप, आपको एक बात बताई जाएगी, मुझे ये काम दिया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ओके. जब तक वो काम नहीं हो जाता, यू विल बी लायबल. या फिर तेरे को ये करना है. ओके. सो व्हाट दे आर टेलिंग, you are they are dedicating you to that particular work so that वो वो एक पर्टिकुलर वर्क में आपका प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर पाए. या फिर सिंपली जो एग्जीक्यूशन उनको चाहिए या फिर जो आउटकम्स उनको चाहिए, दे आर पुटिंग यू एट दैट रोल. ओके. So these are the things that happens in the industry. So building a tech stack for the development. Okay, what is a technology stack? First of all, a very cluttered concept कि हाँ ये तो इसको तो पूरा आता है, ये पूरा कर लेता है. कुछ नहीं होता है ऐसा. ठीक है. You know, if you know whole ecosystem, that is a good thing. But if you are, it is like just like ना, you just have to be a master of one and jack of all. Okay. मतलब आपको सिर्फ एक चीज में एक्सपर्टीज लानी है, उसके बाद आपको पूरी बाकी की चीजें धीरे धीरे समझ में आती है. बट इफ यू आर ट्राइंग कि हाँ सारा पहले समझ लूंगा फिर एक में मास्टरी करूंगा, ओके, दैट टू वर्क्स. बट हियर इज व्हाट ना, जो डाइवर्जन फोकस का हो जाता है वो नहीं होना चाहिए. ओके. बिकॉज सिंपली इफ आई एम इन डेवलपमेंट ना, तो आई यूज टू थिंक लाइक हाँ मैं डेवलपमेंट भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा. नहीं, चीजें वर्क नहीं करती. when you're a developer ना, you have to be you have to put your 100% over there only. Okay. So it is just like कि हाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, करो. इट इज ग्रेट थिंग टू डू. बट हाँ एक ओवरव्यू रखो. डेवलप होने के बाद कौन सा स्टेक होल्डर के काम हाथ में जाएगा, वो उसका क्या एक्शन रहेगा, या फिर डिपेंडिंग ऑन हिज एक्शन व्हाट विल बी माय रोल. ओके. तो दिस इज जस्ट एन इकोसिस्टम. ओके. Coming to the point, what is a tech stack in software development? First is your business logic, जो हमने कोड या फिर डेवलपमेंट पार्ट में देखा. Then developing your view of the user interface or the user experience, that is the one major thing. Then comes your database.
managing the data in your application. Then comes the environment. Environment is what where you will be running your application. Okay, so it is not like कि हाँ environment is just like a आप garden में जाते हो, what environment it has. Okay, वहाँ पे एक बोलते हैं ना कि हाँ गार्डन में ट्रीज है, गार्डन में लाइक बहुत लोग रहते हैं या फिर सिंपली जो जो फ्रस्ट्रेटेड माइंड है वो गार्डन में जाके रिलैक्स हो सकता है. तो वहाँ पे एक है, इट इज एनवायरमेंट व्हाट इट इज मेड फॉर. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने सुना होगा कि क्लास में जो लेक्चर है वो चल रहा है एंड योर सर इज टेलिंग कि हाँ ठीक से बैठ या फिर गार्डन में आया है क्या. Behave like you are in a classroom. Okay, so it is just that thing. If you are behaving like yeah, I'm in this environment, then yes, in that particular your environment you will be having a good result. And you are behaving like you are taking an education and you are just relaxed, कुछ नहीं चल रहा है चलने दो. That doesn't work. Okay, so being aware of environment is a one thing in real life, and in technical terms also it is very important to have a execution environment. Okay, आप ऐसा नहीं कर सकते कि पाइथन में कोड बनाया है और उसका जो डिप्लॉयमेंट या फिर जो डिप्लॉयमेंट एनवायरमेंट है वो मैं नोड में कर दूंगा. नहीं, उसके लिए अलग चीजें हैं, इसके लिए अलग चीजें. गेटिंग माय पॉइंट्स. ओके, coming to the available tech stack for the development. uh, Development क्या है, लाइक आप एप्लीकेशन बना रहे हो. एप्लीकेशन इज व्हाट बेसिकली इकोसिस्टम जिसमें डेटाबेस है, जिसमें बिजनेस लॉजिक है, जिसमें फ्रंट एंड है, जिसमें बैक एंड है, जिसमें योर सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर है और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें. ओके, बट वेयर you can start. Okay, I'll be telling you like benefits of each and benefits for using each and every technology, because मेरा particular expertise that is in Django and Python. Okay, so whenever it comes to the development ना, you have to be very specific while choosing a technology. Okay, मान के चलो आपको टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं आती. ओके, एंड आपको स्किल डेवलपमेंट करना है, वो चीज के लिए अलग टेक स्टैक है, या फिर आपको टेक्नोलॉजी आती है आपको फास्ट डेवलपमेंट के लिए वो एक सिनेरियो के लिए अलग टेक स्टैक है. ऐसा नहीं कि लाइक मान के चलो कि 1990s में जो सॉफ्टवेयर बना है, ओके, उसका आज सिग्निफिकेंस नहीं है. स्टिल इट इज सिग्निफिकेंट, बट क्या है ना कि वो एक पर्टिकुलर टेक स्टैक पे जो बना है, और अभी अगर वो एक पर्टिकुलर टेक स्टैक को अगर माइंड में रख के उसको प्रोसेस करेंगे कि हाँ ये बनने में कितना टाइम लगेगा, it may take a lot more thing, but that is easier to work on previous technology for companies. It works that way. Okay, so coming to the point is like first is LAMP, Linux Apache server you will be having, then MySQL as a database, PHP for front end on the back end logic, then you have Python or the Perl, any of the thing you can choose. That is a LAMP stack. Then comes your mean stack and one stack. Mean is what MongoDB, that is your non-relational database we'll be working with. Okay. Then comes your Express.js. Express.js is what? It is a backend framework. Okay. Then your AngularJS, which is a front-end framework, and Node. Okay. If I make a single change, I'm just shifting technology to from Angular to React.js. Okay. So that time it becomes Merge stack. Okay. In Merge stack, it is like ना React जो है वो Facebook ने डेवलप करके रखा है, and Angular has developed by some another company. Okay. तो उनके लिए जो डेवलपमेंट सिनेरियो रहेंगे वो सर्टन सॉर्ट ऑफ अलग रहेंगे, या फिर रिएक्ट में जो डेवलपमेंट होता है वो अलग रहेगा. ओके, बट अल्टीमेटली दे आर स्ट्राइविंग फॉर मेन कॉज. ओके, दैट इज एप्लीकेशन डेवलपमेंट. ओके, देन कम्स योर Maven. Okay, in Maven, you got MongoDB, Express.js, Vue.js. That is one another framework that is like booming in this current scenarios or the trends in the IT industry. So that is a Node. Again, Node. Node is what? It is a environment. Okay. So for the JavaScript development or JavaScript execution application. Okay. Coming to the next, that is your Django and Python. Django actually provides you the like very subtle infrastructure. Okay, to work on.
yeah, it is hard to have some knowledge in Django या फिर बोल सकते हैं ना कि हाँ ये थोड़ा दिमाग में जाने को थोड़ा हाँ है difficult है, but when you know that technology you will have a fast development scenarios. Okay, मान के चलो मीन स्टैक पकड़ लो. मीन स्टैक में अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो मीन स्टैक में बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी कि हाँ मीन स्टैक है, इजी टू इम्प्लीमेंट है. लाइक प्रोजेक्ट अगर इनिशिएट करना है तो इनिशिएट करने को अपने को खाली 2 या 3 घंटे लगेंगे. बट इट इज नॉट द सेम सिनेरियो विद Django. Django को सेटअप करने के लिए आपको एटलीस्ट इट विल टेक 6 or 7 hours. Okay, but once we set up the Django environment or the dependencies libraries or the package component, everything, at that time it becomes very easy to implement further operations. That could be your CUD operation, that could be your analytics operation, whatever it may be. This is what where we have a stand what to choose. Okay, so it was that way. Okay, coming to our competencies that we work on या फिर हम जिसमें काम करते हैं, हमारा जो मोस्टली जो डेवलपमेंट है दैट इज इन द Django, देन रिएक्ट, बूटस्ट्रैप. बूटस्ट्रैप आई गेस आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, देखा होगा या फिर करा होगा. इम्प्लीमेंट भी बहुत लोग करते हैं, बट अगेन कि एक गाइडेड वे नहीं है, उसके वजह से बहुत बार लैग कर जाते हैं या फिर हाँ पता है गाइड भी है लेकिन करने की इच्छा नहीं होती. दैट इज अनदर थिंग. Okay, that time you need to change your mindset and work on it. Okay, anybody want to speak? Okay, coming to the project execution in industry, it is not like कि हाँ अभी जो करंट सिनेरियोस चल रहे हैं जैसे कि बहुत सारे कंपनीज ने उनका हायरिंग रोक दिया है. ठीक है, हम वो एक पॉइंट पे भी आएंगे, बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन कैसे होता है इंडस्ट्री में. ओके, so here what we will learn things now. First is the software development cycle, SDLC, that we have discussed earlier. पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, फिर उसके बाद डिफाइन करेंगे वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट को डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे. उसके बाद वो पूरे जो डेवलपमेंट करा है वो वर्क कर रहा है कि नहीं उसको मैन्युअली टेस्ट करेंगे, फिर मशीन टेस्टिंग करेंगे. ओके, उसके बाद डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट इज लाइक व्हाट? डिप्लॉयमेंट इज लाइक ना हाँ बन गया है अभी यूज करो आप. That is the deployment, nothing else. Okay, and when it comes to the CI/CD, I guess you guys have heard about CI/CD pipeline, continuous integration, continuous deployment. Okay, when it comes to the long-term project, now at that time you have to continuously work on that things like requirements are coming day by day, and at every single sprint cycle you need some more execution, you need some more operations, you need some more features to implement. So at that time CI/CD works. Okay, CI/CD is what you are just making या फिर सिंपली एक ऐसा पकड़ लो कि हाँ अभी एक रिक्वायरमेंट आई है इन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, अपने को एक फीचर ऐड ऑन करना है, ऐड ऑन करेंगे. उसके बाद उसको ऐड ऑन इज व्हाट जस्ट वी विल एनालाइज दैट रिक्वायरमेंट. उसके बाद उसको एक बिल्ड क्रिएट करेंगे, बिल्ड करने के बाद कोड एग्जीक्यूट करेंगे, कोड एग्जीक्यूट करने के बाद उसको टेस्ट करेंगे इज इट वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट. देन वी विल गो टू द रिलीज. रिलीज इज व्हाट, हाँ बन गया है अभी डिप्लॉय करते हैं. ओके, देन वी विल चेक फॉर is it working on deployment server also or not. Then we will monitor what consequences are occurring while having such execution over the deployment server. So this is a continuous cycle. It keeps on going. Okay. So whenever it is like ना कि हाँ अभी एक requirement गई है, मतलब development हो चुका है वो particular requirement का. Now it is second week, second sprint. Okay, second sprint cycle में क्या करेंगे कि हाँ पहली रिक्वायरमेंट बन गई है, अभी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके या फिर नया एक जो सेट ऑफ आउटकम्स या फिर सेट ऑफ फीचर्स नए डालना है. So in that case, what we'll do again, we will analyze previous executed things. Then we will have a code on it. We will have a plan on it. We'll have a development on it, and it goes on. So this is the basic scenario when you are implementing the things. Okay. So let's have a break of 5 minutes. I know session is getting extended, but still, uh, so just a minute. I'll be back in 5 minutes.
Till time, if you guys do have some questions, you can just put on the chat box. Okay, I'll be noting all the things. Like I'll take note of all things. Okay, we will have a discussion on project scenarios that an industry occurs. Okay, and we'll have a discussion session directly. Okay. Guys, keep posting your things in chat box. Whatever doubts you do have. Yeah, you can unmute too. Okay. Moving towards next point, that is a project execution scenarios in industry. Uh, in last year, we do have one project called Last Working Day. Okay, तो वहां पे क्या था ना, जो लास्ट वर्किंग डे वाज द कंसेप्ट लाइक ना कि हाँ, एक जॉब पोर्टल बनाने वाले हैं और मतलब इसके लिए जिनको नए जॉब के लिए स्विच करना है. ओके, तो एट दैट टाइम ना देवर हैविंग अ रिक्वायरमेंट लाइक उनका एक रिज्यूम, हर एक कैंडिडेट का एक रिज्यूम रहता है, राइट? तो वो रिज्यूम पार्सर का इम्प्लीमेंटेशन करना था. ओके, सो इन लाइक एग्जीक्यूशन जो चीजें हमने फेस करी, आई विल बी लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन सच सिनेरियो. ओके, तो द थिंग वाज लाइक ना कि हाँ, रिज्यूम पार्सर इम्प्लीमेंट करना है. एट दैट टाइम दिस वाज अ प्रोजेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वेब डेवलपमेंट. ओके, बट व्हेन इट कम्स टू द पार्सिंग, we need a machine learning concepts, some NLP kind of libraries or the packages. Okay, and if we don't have such expertise at that time, project's core is what कि हाँ, resume parser पहले implement करना है, फिर जाके बाकी की चीजें implement होगी. ओके, तो एट दैट टाइम ना कि वी वर लाइक हाँ, अभी ये पर्टिकुलर सिनेरियो है, तो इसके लिए क्या क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे. ओके, एंड इन इंडस्ट्री यू विल बी फेसिंग सच सिनेरियोज कि हाँ, आपको काम मतलब आपको एक रोल दिया हुआ है वो अलग है, और आपके लिए जो रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स आ रही है वो अलग है. तो व्हाट यू कैन डू एट दैट टाइम, या फिर इंडस्ट्रीज क्या करती है. ओके, बेसिकली देखा जाए कोई भी प्रोजेक्ट रहे इंडस्ट्री में या फिर डेवलपमेंट में, requirements are going to decide the direction of it. Simple, nothing else. If you guys having a requirement on that particular niche or that particular technology, so you have to work on that thing only. It is not like कि हाँ, मेरे को ये काम दिया है मैं यही करूंगा. In industry you will get such scenario कि हाँ, ये चीज वर्क नहीं कर रही and this is related to my field, so I need to take step. Okay, so these are the thing you will be implement या फिर एक्सपीरियंस करेंगे आप वहाँ पे. उसके बाद जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन हमने करा ना, पहले बता देते हो रिज्यूम पार्सर क्या होता है. पार्सर इज व्हाट लाइक रिज्यूम एक टेक्स्ट या फिर पीडीएफ फाइल है. ओके, उसको हम मशीन को देंगे, मशीन विल एनालाइज दैट पर्टिकुलर फाइल और उसमें से जो नेम है, फोन नंबर है, उसको सेग्रीगेट करेगा. ओके, एंड द स्किल्स, ईमेल, वट एवर द थिंग्स यू वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम. Okay, and implementing those things directly into database. Okay, अभी नेम के फील्ड में मैं जो फाइल है, अपना रिज्यूम का फाइल है, वो तो नहीं पेस्ट कर सकता. नेम के यहाँ पे नेम कैरेक्टर फील्ड ही चाहिए. तो एट दैट टाइम ना, रिज्यूम पार्सर वाज लाइक ना हाँ, इट वाज गिविंग अ कन्वीनियंस टू कैंडिडेट. ओके, एंड टेकिंग अ प्रायर थिंग इन माइंड कि क्लाइंट इज टेलिंग कि हाँ, मुझे कन्वीनियंस चाहिए. जितना ज्यादा कन्वीनियंस है उतने ज्यादा टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन है. तो इट वर्क्स लाइक दैट. ओके,
Then coming to the next thing, that is a bike project, bike care project. Recently, 4 or 5 months ago, we do have it. Okay. There is one uh, bike repair shop, or you can say a garage. Okay. There, you guys were having like na, they were like, हाँ हमें ना हम बाइक्स रिपेयर करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं. We are working since like 1990s. So for us, we have a one thing, that is a customer trust. Okay. So at trust level, what we can implement. So what we suggest them, you can simply implement a CCTV footage on your web application. Okay. Whenever XYZ bike is coming to garage and having service over there, या फिर बहुत बार अभी उनको जो टेक्नोलॉजी हमने दी थी, उनका कैसा था कि बाइक पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस था. ओके, मान के चलो XYZ लोकेशन पे एक बाइक बंद पड़ गई है, तो वहां पे जाएगा बंदा, गाड़ी लेके गैरेज में जाएगा, अगर वहां पे रिपेयर नहीं हो पा रही तो. ओके, एट दैट टाइम ट्रस्ट फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ये मेरा अच्छा बाइक है, मैंने बहुत मेहनत करके बाइक ली है, इसके साथ कुछ बुरा ना हो. तो assuming such scenarios, we have solution like कि हाँ, आप सिंपली सीसीटीवी फुटेज ऑन वेब एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि जब भी मान के चलो कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा. ठीक है, whenever your bikes or the particular asset is coming to service now, so at that time what the that serviceman will be doing, he'll just notifying that particular customer कि हाँ आपका बाइक अभी सर्विस होने जा रहा है. यू कैन सिंपली हैव अ वॉच कि हाँ ये आपकी बाइक का ये चीजें आपकी बाइक के साथ परफॉर्म हो रही है, या फिर ये टेस्ट हम ये पर्टिकुलर चीज पे कर रहे हैं. तो इट इज जस्ट लाइक कि हाँ उनके लिए ट्रस्ट फैक्टर, मतलब मान के चलो कि उनको मार्केटिंग करते हैं, तो मार्केटिंग लेवल पे भी दे विल बी लाइक हाँ वी आर गिविंग अ लाइव फुटेज कि हाँ आपके बाइक के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, या फिर आपके एसेट्स के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है. ओके, सो विद दैट पर्सपेक्टिव यू नीड सम इनोवेटिव सॉल्यूशंस कि हाँ प्रॉब्लम प्रॉब्लम तब तक है जब तक आपको उसका एग्जैक्ट ये नहीं पता. व्हेन यू नो कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या क्या दिक्कतें हैं, your mind starts thinking on it and will have a जो बोलते हैं ना कि हाँ रिस्पॉन्स टू योर थॉट. तो वो एक चीज है, वो वहां पे इम्प्लीमेंट होगी डायरेक्टली. और ये कब होगा, जब यू नो यू हैव वर्क ऑन इट. ओके. तो बेसिकली अभी के टाइम पे जो सिनेरियो चल रहा है स्टार्टअप में एमएनसी में, क्या डिफरेंस है, या फिर हमें कहाँ जाना चाहिए, स्टार्टअप में जाना चाहिए, एमएनसी में जाना चाहिए. सिंपल इज द थिंग. एमएनसी क्या करते हैं मोस्टली, वो मास रिक्रूटमेंट करते हैं. मास रिक्रूटमेंट मतलब क्या, हाँ अभी टीसीएस पिछले साल आई थी, टीसीएस ने लगभग 30 to 40 स्टूडेंट्स एक्वायर कर लिए थे, या फिर एम्प्लॉयमेंट दी थी उनको. तो व्हाट दे वर डूइंग ना कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है, इनको बेसिक फंडामेंटल्स आता है, इनको ले लो, इनको हम टेक्नोलॉजी सिखा देंगे और इनको उनको यूटिलाइज करेंगे आफ्टर 4 months ऑफ इंटर्नशिप, आफ्टर 6 months ऑफ इंटर्नशिप, एंड दे विल बी यूटिलाइजिंग यू गाइस एट डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स. ओके, बट स्टार्टअप में ऐसा सिनेरियो नहीं होता. स्टार्टअप में क्या है, दे विल बी हायरिंग 2 or 3, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल हायर सिंगल पीपल. इवन दे डोंट हायर if they don't find that particular uh, man, the woman is not having such kind of knowledge or the expertise. Okay, so at that time, na, you have to be very specific what to choose. If you're willing to learn all the things from scratch, you should join the startup where you'll be getting all the things or the scenario in your direct contact. Okay, so वो डिफरेंस होता है बेसिकली. स्टार्टअप, व्हाट स्टार्टअप से बीइंग मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ वन. ओके, मतलब स्टार्टअप में आपको मास्टर तो बनना ही है, और सब चीजें पता होती है आपको. मतलब टीम छोटी होती है तो ठीक है, हाँ ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, आई नो एवरीथिंग इन दैट, क्योंकि मैंने इस पे काम करा है एंड आई विल बी वर्किंग ऑन इट. एंड इन एमएनसी यू विल बी गिवन अ स्मॉल स्टफ कि हाँ ये पर्टिकुलर कोड मॉड्यूल है, इस पे ही तुझे काम करना है. ठीक है, तो वहां पे आप मास्टर बनते हो, बट टू दैट पर्टिकुलर niche or to that particular set of requirements. Okay, so this is a prior thing. When it comes to development and programming or coding, you can see image one, image two. What is development? Development is just like you're building something
and you are implementing like you'll be having an infrastructure map, you will be having a team, you will be having assets to build that particular thing, you will be having a talent to build that thing. Okay, and in programming it is just like कि हाँ आपको चीजें आती हैं, you will be executing it. Okay, मतलब आपको कोड आ रहा है, you will be doing programming over there. Okay, so this is the basic difference. Development क्या है? You need to consider all aspects. Okay, coding is a single aspect. It is a one aspect only. Okay, so whenever you are trying to see ना कि हाँ मैं coding में अच्छा हूँ, I can directly jump into coding. ठीक है, it is all right. अगर आपको coding नहीं आता, simply you can go with the overview. Okay, by having overview, you will come to know कि मैं कहाँ fit बैठ सकता हूँ. I don't know what to do. In that case, हाँ, you will be having a clear idea कि हाँ ये मेरे लिए मेरे scope के अंदर आता है. Okay, so these are the basic things. So coming to the execution and preparations, it is like कि fundamentals is the first thing to do. मतलब जब भी आपको इंटरव्यू के लिए या फिर खुद की कोई चीज बनानी है उसके लिए प्रिपेयर करना है, तो at that time you should go with the first fundamentals, then study your frameworks, environments, libraries, packages. Okay, then execute the things. Okay, like project execution is what, like हाँ कुछ चीजें हैं जो मैं खुद से कर रहा हूँ, that is execution. And if you are executing things which relies in ecosystem or relies on the ecosystem, at that time you will be having a clear idea कि हाँ एक ओवरव्यू रहेगा कि हाँ ये मैंने डेवलप करा है, ये पर्टिकुलर चीज के इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं, I know them. Okay, even if you find error in your own thing, you will be getting solution in another thing. So that is all about ecosystem and execution. Project deployment, you know, you will be having a servers and you will be just putting your code on that particular platform, setting environment and doing things. Okay. Next thing is CI/CD pipelines to work on CI/CD, continuous integration, continuous deployment, as we have discussed earlier. Okay. And most important, whenever you go for interview, what they ask you for. Most of the students, what they do na, कि हाँ, confidence is a key. Confidence is a key, but before confidence, there are a lot much things to do. You have to be genuine. You have to show your skills. Okay, skills कब show कर सकते हैं जब आपने खुद चीजें करी होगी, आपने खुद चीजें try करी होगी. At that time only you can show the things, skills. Okay, आप में इच्छा होनी चाहिए. You must have a will. Okay, या फिर जो particular position के लिए apply कर रहे हो, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन का या फिर रोल का एक रेलेवेंसी मैट्रिक्स होता है. मतलब मान के चलो यू आर अप्लाइंग फॉर सेल्स, बीइंग अ कोडर, आपको सेल्स का कुछ पता नहीं है, आपको सिर्फ कोडिंग आता है. इन दैट केस सेल्स इंटरव्यू विल नॉट अलाउ यू टू कम इन. आप अच्छे सेल्स पर्सन हो, इन दैट केस ओनली sales team will acquire you. Okay, so these are just the key parameter that you have to work on. When what are the key factors they ask in interview? Whenever I took interview my own ventures, what I see genuineness, see the skill, I see the will. Okay, is anyone applying for that particular? मतलब हाँ उसको आता है. In that case, it is totally fine. Okay, a single person can have a knowledge of multiple domains. Okay, but still there are some parameters to get fit. Okay, तो वो एक चीज होती है. अगेन कॉन्फिडेंस इज अ लाइक गुड थिंग. व्हेन अगर आपके पास स्किल है, आपके पास विल है ना, तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी है. अगर इनमें से एक भी चीज अगर लैग होगी ना, लाइक सिस्टम विल कोलैप्स. इट इज लाइक दैट. तो जस्ट बी अवेयर कि हाँ, लाइक वो कहते हैं ना कि हाँ मुझे समंदर में तैरना है लेकिन मेरे को तैरना आता नहीं, डायरेक्टली डुबकी लगा दी, मर जाओगे, बाकी कुछ नहीं होगा. Okay, so be prepared for the consequences that you are going to face. उसके बाद like एक बोलते ना कि हाँ प्रिपरेशन करके उठोगे तो कुछ ना कुछ हाथ में लेकर आओगे. विदाउट प्रिपरेशन जाओगे तो टाइम भी बर्बाद करोगे और एफर्ट भी बर्बाद करोगे, बाकी कुछ नहीं करोगे. तो इट इज दैट सिंपल. एंड whenever we do like ना कि हाँ graduates are preparing every guy graduates without preparation what they are doing. Like I am an engineer, I have studied engineering, मुझे जॉब दे दो. एंड कंपनीज भी लाइक भाई क्या कर रहा है तू, थोड़ा रिलेवेंसी तो हो. इट इज
it is that perspective. When you are working in the, yeah, you are applying for the roles, or you are applying for the uh, jobs. So it is that way. So that's it from my end for today. I hope you guys have enjoyed the session. या फिर जिनको बोर लगा होगा, simply they have left, and that is good. क्योंकि अगर उनको लगता है कि हाँ, this is not fruitful for me, why should they invest their time? Okay. So if you guys do have noted your questions, you can ask me directly. Okay. For today, it's all done from my end. You can go with the questions. Yes, right. So students, if you have any question, I mean, this is the best part of any webinar, because during this session, whatever questions that comes in our mind, we just populate all those questions towards the end of this session, and don't let any questions be in your mind. I think that's the best way to clarify your doubts. So anybody is having any question, you can unmute your mic, or you can type in the chat box as well. No problem. Absolutely. I hope there are no questions. Is there? You can raise All your guys are hand. intelligent. They are Yeah, intelligent. Yes, yes. You can raise your hand, in fact, and you can ask, unmute your mic, and you can ask the question. Yes. Is there anybody who is interested to ask? No. Okay, take your time. I'll just give you 2 minutes to think and ask your questions. And then otherwise, because his time is also precious, he has contributed his very important time for you people. That's the reason I unmuted myself. I have muted myself, and I turn off my camera during this session. But I was listening him throughout the session. I was there. I was listening you. The reason is that I don't want to be in between you and the students. So I wanted to make it, yeah, so that it should be like your friend is communicating with you. Anyways, I hope there are no questions. They all understood what you said. Okay, anyway, thanks a lot, Shubham. We are towards the end of this. Yeah, we are towards the last part of this, concluding part of this session. I deemed it great privilege to propose the vote of thanks. I would like to express my heartiest thanks to the Shubham for taking the time from his busy schedule, and on a short notice period, he has accepted my invitation. I think yesterday evening we were discussing that we are planning about today's session. I was not sure that whether we could plan this or not, because he is always busy. But I requested him that please spare this 1.5 hours for your friends, in fact, and he was agree for that. And today this event is the reality, is in reality. So thanks a lot, Shubham, once again for your dedication, for your contribution in the growth of our department, in the development of department. Your comments, your suggestions are always welcome to groom these budding engineers who are aspirants for the different dreams in the field of information technology. Thanks a lot, everyone. I'm going to just put the uh, feedback link of this session in the chat box. All are requested to fill your feedback, so that this feedback will also helpful to the Shubham. Shubham, I am also going to share the feedback for you as an expert. So how did you feel? So I'm thanks a not lot. an expert, sir. I'm just a student. Okay, thanks a lot once again. Thank you. And with this, I will declare that this session is concluded. We can exit this meeting. Yeah. Thank you. Thank you, Shubham. Yeah. Sure. Yeah. Thanks a lot. Have a Yeah. great day. Have a great day. Have a great day.